Hello and welcome. Welcome to learning session number 6 of chapter number 3 of geometry, which is circle. Okay, so in the last learning session, we had learnt about inscribed angle, right? What is inscribed angle? When the vertex of the angle is on the circle and the two arms of the angle intersect the circle at two different points. Okay, point number 1 here and point number 2. So this is an inscribed angle. Vertex circle पे और वो जो दो arms है वो दो अलग अलग point पे circle को meet कर रहा है, okay, और intersect कर रहा है. Then we had seen intercepted arc. What is intercepted arc? Whichever arc is in the interior of the angle is known as the intercepted arc, right? So here you have an inscribed angle, and which arc is in the interior of this angle? Arc AC. Similarly here, this is not an inscribed angle. Why? Because the vertex is on the circle, but the arm is going upwards and it is not intersecting the circle. So this is not an inscribed angle, but even then it will have an intercepted arc. Okay. So which arc is in the interior of this angle? Arc BC, right? Arc BC is in the interior of this angle. Here arc AC is in the interior of this angle. Here there are two arcs in the interior. Okay, so here there are two intercepted arcs. Here is one intercepted arc first, and here is the second one. Similarly, here also there are two intercepted arcs. Here is your first intercepted arc. Here is your second intercepted arc. Okay, similarly here the entire circle is intercepted. So here one part of the circle is intercepted, and here the second part of the circle is intercepted. So the entire circle itself is intercepted. So it's seen intercepted arc next. Okay, then we had seen inscribed angle theorem. What does inscribed angle theorem tell you? The measure of the inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. यानी inscribed angle कौन सा यहाँ पे? Angle ABC. So measurement of angle ABC will be equal to half of measurement of arc intercepted by it. कौन सा arc intercept किया उसने? Arc ADC. Arc ADC को intercept किया ना इस angle ने. So the measure of this angle will be half of the measure of this arc. Okay, so you will write measure of angle ABC. ABC यहाँ पे है. Will be half of measure of arc ADC. ADC यहाँ पे. That was inscribed angle theorem. But then we had seen what happens if this point is either outside the circle or it is inside the circle. Okay, अगर ये point बाहर चला गया तो हम लोग inscribed angle theorem को कैसे modify कर सकते हैं, और अगर ये point अंदर आ गया तो again how can we modify inscribed angle theorem so that we can write some formula for it. Okay, so these were the two modifications we saw. First, if this point comes inside, okay, if this point comes inside, then what you will do is वो जो दो arc होते हैं दोनों को add कर दोगे. If you want angle AEC, देखो angle AEC यहाँ पे है. So inscribed angle theorem के हिसाब से क्या होना चाहिए? Measure angle AEC should be half of measure arc AC, right? But ये point जो है ये सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के अंदर है, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा. क्या मॉडिफाई करोगे? You will add this measurement of this arc with measurement of this arc. Okay, DB. Okay, so measure arc AC plus measure arc DB. जो कोई भी आर्क होगा उस एंगल के सामने उसको एंड उसके ऑपोजिट में जो आर्क होगा उन दोनों को ऐड करना है. Okay, so that's your measure angle AEC. AEC. Similarly, if you want to write measure of angle CEB, CEB is over here, right? CEB. So again, you will use the same logic. Half into, you will add the measurement of two arcs. ये जो angle के सामने arc है CB, उसको add कर दो. So here they have written CB plus उसके opposite जो arc है AD. AD उसके opposite है तो उसको add कर दो. दोनों को add करो फिर half से multiply करो. So this was the first modification we saw. If the vertex of the angle is inside the circle. What is the second modification we had seen yesterday? The second modification is if the point is outside the circle. So if the point is outside the circle, again there will be two arcs intercepted. यहाँ पे BD arc को भी intercept किया है, यहाँ पे AC arc को भी intercept किया. Okay, so what you will do is bigger arc minus smaller arc and then you multiply by half. तो bigger arc क्या है? BD. So BD में से smaller arc को minus कर दो AC, measure of arc AC minus कर लिया, then you multiply by half and you get measure of angle BED. BED यहाँ पे है. Okay, so अगर external point होगा तो दोनों arcs को minus कर दो, internal point होगा तो दोनों arcs को add कर दो. This modification you have to remember for using inscribed angle theorem when the point is either inside or outside the circle. Okay, this was a quick revision of our last learning session. Okay, but objective for today is going to be students will be able to solve problems based on cyclic quadrilaterals. Okay, so we're going to see what are cyclic quadrilaterals today, and we are going to see some properties, some theorems based on cyclic quadrilaterals. Okay, the first question to answer is what is a cyclic quadrilateral? So if all vertices of a quadrilateral lie on the same circle,
then it is called a cyclic quadrilateral. Okay, all vertices matlab, okay, before vertices, what is quadrilateral? Quadrilateral means any four-sided figure. Okay, triangle means any three-sided figure. Quadrilateral means any four-sided figure. Okay, quad matlab char. Okay, so that four-sided figure can be a square, it could be a rectangle, it could be a rhombus, it could be a kite, it could be any four-sided figure, parallelogram, trapezium, but the point is it should have four sides. Okay, then it will be called as a quadrilateral. So a square, parallelogram, trapezium, all of these are examples of quadrilaterals. Okay. Okay, so now we know what is the meaning of quadrilateral. What is the meaning of vertices of quadrilateral? The vertices matlab kya? We had seen vertex of an angle, right? Here we had seen vertex of an angle, right? Vertex of an angle. So vertex of an angle kya hai? Corner point, right? Vertex of an angle is a corner point. Similarly, for quadrilaterals also, vertex is a corner point. Okay, so A is the vertex, D is a vertex, C is a vertex, and B is a vertex. Okay, so A, B, C, D, all four are the vertices. अगर एक होगा तो vertex बोलेंगे. अगर it is more than one, you'll call as vertices. Okay, so you won't call it as vertexes, you will call it as vertices. एक हुआ तो vertex. If it's more than one, you call it as vertices. Okay, so what are vertices? Corner points. So A, B, C, D, all four are corner points of this quadrilateral. So what is a cyclic quadrilateral? When all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it's a cyclic quadrilateral. So जो points A, B, C and D सारे के सारे points जो एक quadrilateral के vertices है, सारे के सारे points एक ही circle पे lie कर रहे हैं, so it's a cyclic quadrilateral. Okay, I'm going to repeat this one more time. जब किसी भी four sided figure के चारों corner points एक ही circle के ऊपर आ रहे हैं, then you will call it as a cyclic quadrilateral. Okay. So now we know what is the meaning of a cyclic quadrilateral. So what's so special about cyclic quadrilateral? I mean, why are we studying this? Okay, and what is so special about it? इससे हमें problem solve करने में कैसी help होने वाली है? That is because of the cyclic quadrilateral theorem. Okay, the theorem of cyclic quadrilateral. This can be very useful to solve certain kinds of problems. Okay, so what does the theorem tell you? Theorem tells you opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. What does supplementary mean? Do you remember? There are two types of words which are used. One is complementary, the second one is supplementary. So when you say complementary, two angles are complementary, it means दोनों को add करके 90 degrees होता है. Okay, and when you say supplementary, ये दोनों को add करके 180 degrees होते हैं. Okay, I'm going to repeat this one more time. Complementary means when two angles are complementary, दोनों को add करके 90 degrees मिलेंगे. And when you say two angles are supplementary, दोनों को add करके 180 degrees मिलेंगे. Okay, so what are they saying? In theorem of cyclic quadrilateral, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. So angle A and angle C will be supplementary. Angle D and angle B will be supplementary. Okay, so how will you write the statement? So what will be the if part? If is अगर cyclic quadrilateral है तो. Okay, so your if part is quadrilateral ABC. What is the meaning of the symbol? ये जो box बना है, box को कैसे read करेंगे? Quadrilateral. इसको box ABCD नहीं बोलेंगे, आप इसको square ABCD नहीं बोलेंगे, इससे quadrilateral ABCD. Okay, so अगर ये quadrilateral cyclic है, यानी चारों के चारों corner points same circle पे लाए होते हैं, so if quadrilateral ABCD is cyclic, तो क्या होने वाला है? Opposite angles will be supplementary, यानी दोनों को ऐड करके 180 आएगा. So opposite angles कौन से? Angle A and angle C. So sum of angle A and angle C will be 180 degrees. Similarly, बचे दो, angle B plus angle D will be 180 degrees. Okay, so this is how you will write the statement. What will be the converse of cyclic quadrilateral? Okay, you know the meaning of the word converse, right? By now you should know what the meaning of converse of a theorem is. Okay, so converse में क्या होता है? It's the same theorem, but जो कुछ भी if में है वो then में चला जाएगा, जो कुछ भी then में है वो if में आ जाएगा. Okay, so क्या already condition given है और उस condition की वजह से क्या consequence है वो interchange होने वाला है. Okay, so what will be the converse of theorem of quadrilateral theorem? If a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic. Okay, अगर किसी भी quadrilateral का कोई एक पैर, okay, यहाँ पे A पैर लिखा है, right? एक पैर, any one pair of opposite angles is supplementary, यानी कोई भी एक pair of opposite angles को add करके 180 degrees आ गया, then you can say that the quadrilateral is cyclic. Okay, so यहाँ पे if क्या हो जाएगा? Either measure of angle A plus measure of angle C is 180 degree, or measure of angle D
प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज 180 डिग्री। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो चलेगा। वाई? कोई भी एक क्यों ट्रू होना चाहिए? समझो a प्लस सी 180 आ गया, ओके, यानी a प्लस सी 180 आ गया। सबको मिला के, सारे एंगल्स को मिला के कितना आना चाहिए? इन अ ट्राइंगल अगर सारे एंगल्स को इफ यू ऐड यू गेट 180 डिग्रीज। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ यू ऐड ऑल द एंगल्स यू गेट 360 डिग्रीज, राइट? सो अगर a प्लस सी 180 आ गया तो d प्लस बी कितना आ जाएगा? वो भी 180 आना पड़ेगा, राइट? क्योंकि चारों को मिला के 360 आना चाहिए। सो अगर a प्लस सी 180 आ रहा है, टोटल 360 है, तो बाकी दो को ऐड करके भी 180 आना चाहिए, बिकॉज 180 प्लस 180 इज 360। तो या तो मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल c 180 होना चाहिए, या फिर मेजर एंगल d प्लस मेजर एंगल b 180 होना चाहिए। कोई भी एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई दे हैव सेड a पेयर, यानी कोई भी एक पेयर। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, यानी कि सारे कॉर्नर पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे। सो दैट वाज योर थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स एंड कॉन्वर्स ऑफ cyclic quadrilateral theorem. Both of them we have understood. Okay, now let us see another theorem which is also related to cyclic quadrilaterals. Okay, what does this theorem say? If 2 points on a given line subtend equal angles, okay, if 2 points on a given line subtend equal angles, तो समझो ये हमारा लाइन है। okay, the 2 points on the line are point A and point D. okay, so 2 points on a given line अब तक समझ लिया, ये हमारा लाइन है और ये 2 पॉइंट्स जो गिवन है उस लाइन पे मिल गए। सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल यानी यहाँ A और D से यहाँ पे B पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है, और A और D से सेम 2 पॉइंट से एक C एंगल भी बन रहा है, दोनों इक्वल है। इफ दिस इज x दिस इज ऑल्सो x, दोनों x है। ओके, इसका मतलब है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो B और C पॉइंट्स है, दो अलग अलग पॉइंट्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेम पॉइंट पे। ओके, सो ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ओके, सब सेम साइड पे भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि B पॉइंट ऊपर या C पॉइंट नीचे है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सेम साइड पे होते हैं, या तो दोनों ऊपर होने चाहिए या तो दोनों नीचे होने चाहिए। अगर लाइन स्ट्रेट है तो या तो दोनों पॉइंट्स राइट साइड में होने चाहिए या तो दोनों पॉइंट्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ओके, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनसाइक्लिक? टेक अ गेस, कॉनसाइक्लिक मतलब क्या होगा? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि ऑल द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल। कॉनसाइक्लिक मतलब when all points of the or all points lie on the same circle, those points are called as concyclic. Okay, great. So I'm going to quickly revise one more time what this theorem is telling us. The theorem is telling us अगर तुम्हारे पास एक लाइन है और उस लाइन पे 2 पॉइंट्स है और दोनों पॉइंट से दो अलग अलग पॉइंट्स पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं और दोनों एंगल सेम साइड पे है लाइन के। ओके, तो वो जो 4 पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर, जो 2 पॉइंट्स है और जो दो एंगल्स के दो अलग अलग पॉइंट्स बन रहे हैं, वो चारों के चारों पॉइंट्स सेम सर्कल पे लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना दूं तो लोग सेम सर्कल पे लाई करेंगे चारों पॉइंट्स। ओके, दैट्स व्हाट दिस थियरम इज telling you, and we will be using this theorem in one of our problems today. Okay, so you need to remember this theorem. Okay, great. Now we can start solving problems. Okay, no, before that quickly let me show you how will you write this theorem. Okay, so क्या बोला है? When 2 points on a given line subtend equal angles, so कौन से equal angles है हमारे? angle B and angle C is equal, right? So measure angle B is equal to measure angle C. Then those 4 points are concyclic. कौन से? वो जो लाइन पे 2 पॉइंट्स है A D, so then points A D यहाँ पे आ गया and B and C ऊपर है, so B and C all the 4 points will be concyclic, यानी वो सेम सर्कल पे लाई करेंगे। This is how you write this theorem. Okay, next, to note it down in your notebook to quickly summarize everything. It can be summarized in these 4 points. Okay, if you understand and you remember these 4 points, you can successfully solve all problems given in the problem set with respect to this topic. Not problem set, practice set. Okay, so practice set में सारे problem solve हो जाएगा अगर तुम लोग ने इन 4 statements को याद कर लिया। Okay, so make sure you're copying this in your notebook and you're also remembering these points. Okay, now we are ready to solve problems given in the practice set. Okay, so let us begin with question number 2. So I'll read out the problem first. What we are going to do is I'm going to read out the problem. I'm going to read out what has been asked. I'm going to explain you how to solve this problem. We have seen so many problems in chapter circle already, and before that we had seen Pythagoras theorem. So you all by now you all should have gotten a hang of how to write the answer in correct format. Okay, the sums are very easy. All sums given in your
practice set based on cyclic quadrilaterals. All of them are very easy to solve. Okay, most of them are 2 lines, 3 line answers. So finding the correct answer is not that difficult with respect to today's learning session. But are you being able to write it in the correct format, the format which is expected in the board exam? That's what you have to work on. Okay, so I'm going to explain you the sum, how to solve the sum, and then you will try it by yourself how to write it in the correct format. Okay, and then we will cross check. So I'll first start reading the question in figure 3.57. So figure 3.57 is over here. Quadrilateral PQRS is cyclic. Okay, so PQRS is over here. So we can clearly see all 4 corner points lie on the same circle. So quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Okay, then they have given side PQ congruent to side RQ. Okay, so PQ is over here, RQ is over here. So PQ equal to RQ, or PQ congruent to RQ. Next, angle PSR is equal to 110. PSR is over here. So this angle they have given as 110 degrees. Then they have asked you to find 4 things. So the first thing is measure of angle PQR. So measure of angle PQR is over here. How will you find this angle? You know the value of this angle, right? Angle PSR तुम्हें पता है 110. So ये 110 है तुम्हें पता है. How will you find this angle? You know this is a cyclic quadrilateral, right? And we just studied in theorem of cyclic quadrilaterals that opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. What does supplementary mean? दोनों को add करके 180 डिग्री आएगा. So angle S and angle Q दोनों cyclic quadrilateral के opposite angles है, तो दोनों को add करके 180 degrees आ जाएंगे. So angle S plus angle Q will come 180 degrees. So अगर angle S 110 है, so angle Q 180 minus 110, it will come to 70 degrees. Okay, so angle Q मिल गया. So the first part will be done. Next, measure of arc PQR. PQR कहाँ पे है arc? Measure of arc PQR यहाँ पे है. कि ये arc की बात हो रही है. So how will you find the measure of this arc? Use inscribed angle theorem. Okay, कौन सा angle inscribed है उस arc में? PSR. PSR का जो angle है उसके अंदर वो intercept हुआ है, right? Angle PSR जो inscribed angle है उसके अंदर वो intercept हुआ है. And you know from inscribed angle theorem that the measure of inscribed angle is half of the measure of inscribed arc, right? I'm going to repeat that statement. Measure of inscribed angle is half of the intercepted arc, right? So अगर ये 110 है तो जो measure ये arc का जो measure होगा that will be double. क्यों? क्योंकि PSR ये जो 110 है that is half of this arc. Okay, so if you just write that formula and you substitute, you will get it correctly. Okay, so second part will also be done. तुम्हें सिर्फ inscribed angle theorem use करना है. Next, measure of arc QR. QR is an interesting question. Okay, measure of arc QR. QR कैसे find out करोगे? So again, the same thing we are going to do. Find which is the inscribed angle. क्योंकि inscribed angle से ही आने वाला है ये. So inscribed angle कौन सा है? ये किस angle ने इस arc को intercept किया है? Angle QPR, isn't it? Angle QPR. So angle QPR is your inscribed angle और उसके अंदर ये arc QR intercept हुआ, isn't it? तो अगर तुम्हें measure of angle QPR यानी ये angle मिल गया तुम्हें, तो तुम इस arc का measurement बता सकते हो. The question is how will you find this angle? तुम्हें ये angle तो नहीं पता, तुम्हें ये angle पता है, तुम्हें ये angle पता है. How will you find this angle? Now see what is given in the question. They have given that quadrilateral PQR is cyclic, PQ is equal to RQ and PSR का value दे दिया. PSR का value दिया यानी ये angle पता है यानी ये angle पता है. तो तुम्हें ये छोटा angle चाहिए. तो I don't think that is going to be useful. What is going to be useful is side PQ is equal to side QR, right? PQ and QR ये दोनों इस triangle के sides है. ट्रायंगल QPR, ये जो राइट साइड में ट्रायंगल बना है ये QP is equal to QR क्वेश्चन में दे दिया. It means this triangle is an isosceles triangle. So you can use isosceles triangle theorem and say this angle will be equal to this angle. So take these angles as x. Okay. So ये हमें 70 मिला था तो 70 plus x will be equal to 180. And from this you can find the value of x, right? Once you find the value of x, you will find the value of this angle and then again you can use inscribed angle theorem. Angle QPR is equal to half of measure R QR and substitute and you will get the answer. So that's your third part. Fourth part, measure of angle PRQ. PRQ कहाँ पे है? PRQ यहाँ पे. So PRQ हमने already third step में find out किया था, right? इसको हम लोग ने already x assume किया है and x का value तुम्हें वैसे भी third step में आ गया होगा. So you have to just use that. So again this is a one line answer. Okay.
The sum is very easy, it's only long. Okay, thoda lamba hai ye sum, but all the small parts which have been asked, those are very simple to find out. Okay, हम लोग ने बिना पेन एंड पेपर यूज किए बस डायग्राम देख के हम लोग ने सारे आंसर्स मोस्ट ऑफ देम वी हैव फाउंड. Okay, so it's very simple. What you have to now try to learn is, or practice is, how to write it in the correct format. Okay, so what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds. You'll know how to solve this problem now. I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and try to solve the sum by yourself. And once you solve it by yourself, then we will discuss and correct our answers written in the notebooks. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and you have all the 4 answers ready in your notebooks. Okay, now we will cross check. So first part, angle PQR. Angle PQR यानी ये उसके लिए supplementary angle use करना था, right? Supplementary angle, sorry, cyclic quadrilateral का property. So first draw the rough diagram. Just check in your notebooks. Have you drawn the rough diagram on the top right corner? If rough diagram top right corner में नहीं है, you might just lose some marks over there. So make sure there is a rough diagram on the top right corner. Okay. Then you say that quadrilateral PQR is a cyclic quadrilateral. Why do you have to say this? क्योंकि तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो, राइट? सो क्योंकि तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले, यू हैव टू फर्स्ट स्टेट दैट ओके यस quadrilateral PQR is a cyclic quadrilateral, and hence we are able to use that property. So write that it is a cyclic quadrilateral that was given in the question. Then say angle PSR plus angle PQR is equal to 180 degree. Okay, angle PSR plus angle PQR is equal to 180 degree. We are using the property of cyclic quadrilateral. What will be the reason? Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, right? Supplementary यानी दोनों को ऐड करके 180 आएगा. Now just substitute. PSR is 110, that was given in the question. PQR को वैसे के वैसे रखो, उसको find out करना है. 180 को वैसे के वैसे. So 110 उस तरफ जाएगा, तो 180 minus 110, 70 degrees. Put this in pencil box. Okay, always put your final answers in pencil box so that it's easy for the examiner to see that अच्छा इसको correct answer आया. So they, without checking your important stuff, is just going to give you the marks. Okay, we have to make sure कि हम लोग we make it as easy as possible for the examiner to give us the marks. Okay, so first part is done. Second part, measure our PQR यहाँ पे है. So measure our PQR के लिए मैंने क्या बोला था? Inscribed angle theorem यूज करना है. So this is how you use the inscribed angle theorem. कौन सा inscribed angle है? Angle PSR. Angle PSR के अंदर ये इंटरसेप्ट हुआ है PQR, right? So write angle PSR यहाँ पे लिखा है is equal to half of measure PQR. PQR यहाँ पे जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. Angle PSR is equal to half of measure PQR. The reason is inscribed angle theorem. Now just substitute. PSR they have given in the question 110 degrees. Then half into measure of our PQR. PQR तुम्हें ढूंढना था. So half यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 110 multiplied by 2 you will get as 220 degrees. Okay, and put this in pencil box. Okay, so second one was also done. Again, this was a one line answer. So very simple. Third, QR is a little longer sub question. Okay, angle measure at QR. Measure at QR के लिए मैंने क्या बोला था? यहाँ पे QR है. QR के लिए you have to find this angle, this small angle. उसके लिए you will have to use isosceles triangle theorem in the triangle given on the right hand side. Okay, so let's see how to use isosceles triangle theorem on triangle PQR. Okay, so you first say in triangle PQR side PQ is equal to side RQ. PQ यहाँ पे है, RQ यहाँ पे. क्यों? क्योंकि जब भी तुम बोलोगे कि ये दो साइड्स इक्वल है, तभी तुम यूज कर सकते हो isosceles triangle theorem. What is isosceles triangle? When two sides of a triangle are equal, it is called as an isosceles triangle, right? So to use isosceles triangle theorem, you have to first say that there are this triangle is an isosceles triangle, जिसके लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा कौन से दो sides equal है. Okay, so you first say PQ is equal to QR. Okay, you've said that, and it was given in the question, right? So you write the reason as given. Then you say the angles opposite it will be equal. So PQ के opposite कौन सा है? PQ is over here. उसके opposite कौन सा angle है? Angle PRQ. Okay, PQ के opposite angle PRQ. So PQ के नीचे angle PRQ लिख दिया. Then QR के opposite कौन सा angle है? Angle QPR, right? QR ये जो side है उसके opposite कौन सा angle है? Angle QPR. So angle QPR ये दोनों congruent हो जाएंगे. Why? Using isosceles triangle theorem. Okay, just 1 or 2 learning sessions back I had revised isosceles triangle theorem, right? It is being used again and again in this chapter. Okay, so you need to be very thorough with
isosceles triangle theorem, how to use it. Now you have to add all the angles, right? तो जो दो equal angles है दोनों को x ले लो. Okay, so you say measure of angle PRQ is equal to measure angle QPR is equal to x, and now use the property of the triangle, sum of measure of all angles of a triangle is 180 degrees. Okay, so सबको add करके 180. now substitute PQR वैसे के वैसे होगा क्योंकि PQR का वैल्यू तुम्हें पता है, राइट? नेक्स्ट QRP और PRQ को तुमने x ले लिया तो उसके जगह पे x लिख दो. अब PQR क्वेश्चन में कितना दिया था? PQR क्वेश्चन में नहीं, हम लोग ने फर्स्ट में फाइंड आउट किया, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन में PQR को 70 फाइंड आउट किया था. सो यहाँ पे 70 आ गया, x प्लस x 2x आ गया, 180 वैसे का वैसा. सो नाउ व्हाट विल यू डू? 70 को उस तरफ लेके जाओ. 70 को उस तरफ लेके जाओगे, you will get 2x is equal to 180 minus 70 degrees. Okay, so 180 minus 70 is 110. यहाँ पे 2x is equal to 110 है. So ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. So 110 divided by 2, that is 55 degrees. Okay, so तुम्हें which angle is this? Angle PRQ. Angle PRQ is equal to QRP. ये तुम्हें 55 degree मिल गया. Okay, so this is 55 degrees. You call that as equation 1. Okay, now use the inscribed angle theorem. कौन से एंगल पे inscribed angle theorem यूज करोगे? QPR. क्यों? क्योंकि तुम्हें RQR फाइंड आउट करना है. See, the third thing they have asked is RQR. So RQR फाइंड आउट करना है, राइट? सो अभी inscribed angle QPR पे तुम inscribed angle theorem यूज करो. So angle QPR is equal to half of measure R QR. Angle QPR is equal to half of measure R QR. Okay, that is through inscribed angle theorem. Now substitute QPR हम लोग ने 55 degrees फाइंड किया from 1, right? Then half of measure QR. Now ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So measure QR हो जाएगा 110. So QR हो गया 110 degrees. Okay, so you are also done with the third part of the question. Put this in pencil box. Just check, are you able to write all this correctly in your notebooks? Did you take something as x? Did you call this as equation 1? Equation 1 क्यों बोला? Because you're going to use that in the last one. Okay, to find the measure of angle PRQ. So PRQ already हम लोग ने 55 degrees find out किया, right? देखो PRQ को already 55 degrees हम लोग ने बोल दिया थर्ड स्टेप में या थर्ड सब क्वेश्चन में. So this is a one line answer. So PRQ is equal to QPR is equal to 55 degrees from 1. Okay, hence PRQ is equal to 55 degrees. Put this in pencil box. So this was again a one line answer. So if you see, all these 4 things are very easy to find. It's just that it was a little long. Okay, so all you have to do is make sure you're finding कि कौन सा arc पूछा है, उस arc को कौन से angle ने inscribe किया है, and then it becomes very easy if you are thorough with inscribed angle theorem. So none of these questions were difficult. बस लंबा था क्योंकि 4 छोटे-छोटे questions पूछे थे. If you keep your cool and write all the steps correctly, you should get full marks. These are very scoring sums, cyclic quadrilateral. Even inscribed angle intercepted arc sums, they are very scoring in circle. Okay, as compared to this particular practice set, our previous 2 practice sets were a little more challenging, but these are very easy. Okay, so we're done with the second question. We'll move on to the third question. So third question, first let me read it out. Quadrilateral MRPN is cyclic. Okay, इसका मतलब क्या है? all these points, point M, point R, point P, point N, all of them will lie on the same circle. Okay, तो cyclic quadrilateral है, उसमें एंगल R का वैल्यू दे दिया x के फॉर्म में. ओके, यानी एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया, सीधा नंबर नहीं दिया. ओके, वेरिएबल के फॉर्म में दिया. सो एंगल R का वैल्यू दे दिया, एंगल N का वैल्यू दे दिया, एंड वो लोग ने पूछा है एंगल R और N का एंगल्स फाइंड आउट करो नंबर्स में. तुम्हें वेरिएबल्स में दिया है, वो लोग तुम्हें उसको नंबर्स में पूछ रहे हैं. ओके, how will you solve this? Just draw a rough diagram first and use the property of cyclic quadrilaterals. Opposite angles will be supplementary, right? और यहाँ पे opposite angles R and N आ जाएंगे. If you draw the rough diagram, पहले rough diagram draw कर लो, and if you draw the rough diagram and name the cyclic quadrilateral as MRPN, you will find that angle R and angle N are opposite angles, and you know that in cyclic quadrilaterals opposite angles are supplementary, यानी दोनों को add करके 180 आ जाएगा. So 5x minus 13 plus 4x plus 4 तुम्हें add करके 180 आ जाएगा, right? So solve that equation. x को find out करो, एक बार x find out कर दिया तो यहाँ पे substitute करके r angle मिल जाएगा, यहाँ पे substitute करके n angle मिल जाएगा, right? So again a very simple sum. Okay, again what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to solve it by yourself. Once you solve it by yourself, then you will cross check whether we have got the same final answer or not.
Okay, so first draw the rough diagram, then use cyclic quadrilateral theorem, and then once you find the value of x, substitute in angle r and angle n ka expression, and you will get the final answer. Okay, wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and you have got the final answer. Okay, now let us see how to solve this sum. The first step was to draw the rough diagram. Here I have drawn the rough diagram on the bottom right corner, but make sure you're drawing the rough diagram always on the top right corner. Okay, तुम लोग का diagram हमेशा top right corner पे आना चाहिए. I have put it here because I did not have space over here. Okay. So first thing you are going to use the property of cyclic quadrilateral. तो पहले बताना पड़ेगा कि ये quadrilateral cyclic quadrilateral है. Okay. So if you see you've made the rough diagram, then you say that this quadrilateral is cyclic quadrilateral and it was given in the question. Then if you see angle R and angle N opposite में आ रहा है, right? That's what I told you, right? If you draw the rough diagram, it will be very clear कि angle R and angle N एक दूसरे के opposite angles है. Okay? So दोनों को add करके 180 degree आएगा and you write the statement कि दोनों opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Now you substitute R का value क्या था? R का value था 5x minus 13. N का value क्या था? 4x plus 4. Now you solve it. 5x plus 4x will be 9x. Minus 13 plus 4 will be minus 9. Okay, equal to 180 as it is. You minus 9 को उस तरफ लेके जाओ. So minus 9 का plus 9 हो जाएगा. 189 plus 9 will become 189. Now यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे multiply हुआ है, वहां पे जाके divide हो जाएगा. So 189 divided by 9 comes out to be 21. So x is equal to 21. Now you just resubstitute in the expressions for angle R and angle N. So angle R क्या था? एंगल आर था 5x minus 13. So अभी x के यहाँ पे 21 लिख दो. Okay, so 5 into 21 minus 13. So 5 into 21 105 आ जाएगा, minus 13 92. Similarly you solve the expression, or rather you substitute the value of x in the expression for angle n and you get the answer 88 degrees. Okay, again you check in your notebooks whether you have written the final answer again and put it in the pencil box. Did you write this final answer again and have you put that in a pencil box? That you have to check. Okay, check whether you've drawn the rough diagram in the top right corner. All these things should have become a habit by now. Okay, only once it becomes a habit, you don't have to think about it in the exam and वो automatically तुम्हारे exam में हो जाएगा. Okay, so we also done with the third question. Next, fifth question. Again, fifth question is a very simple question. Okay, prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral के लिए तुम्हें क्या prove करना पड़ता है कि कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आ जाए. यानी व्हाट यू हैव टू प्रूव इज कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, ये तुम्हें प्रूव करना है. अगर वो तुम प्रूव कर पाए देन यू कैन से इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कैसे प्रूव करोगे? रेक्टेंगल का तुम्हें पता है कि सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो कोई भी ऑपोजिट एंगल्स को ऐड कर लो, 90 plus 90 180 आ जाएगा. सो अगेन 1 or 2 लाइन का आंसर है. सो ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. I'll wait for 5 seconds. You write it down by yourself in the correct format, rough diagram given to proof, all that. Write it down, and then after 5 seconds, after you again play the video, we'll cross check whether you have written it in the correct format or not. Okay, okay, I hope you paused the video and have written the answer already. Okay, it was a very simple 1 or 2 line answer. Okay, so let us start cross checking whatever you have written in the notebook. Is it correct? Is it in the correct format or not? So the first step was to draw the rough diagram. Just check whether you have drawn the rough diagram on the top right corner. That's always your first step. So rough diagram में rectangle draw करना था and you give a name to that rectangle. Okay, then you have to write given and to prove. Given में क्या है? ABCD is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle. That is your given. What do you have to prove? Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. So you have to show that दोनों opposite कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, ये तुम्हें प्रूव करना है, राइट? सो यू फर्स्ट से दैट quadrilateral ABCD is a rectangle that was given in the questions, and because of that all angles are equal to 90 degrees. Why? Because all of them are angles of a rectangle. रेक्टेंगल का डेफिनेशन ही होता है कि जिसमें सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, राइट? सो अभी कोई भी एक ऑपोजिट पेयर्स को ऐड कर दो, या तो A plus C को ऐड कर दो या फिर D plus B को ऐड कर दो, कोई भी चलेगा. So they have added A plus C. So A plus C is equal to 90 plus 90. So A plus C 180 degrees आ गया. 180 degrees आ गया यानी ये जो quadrilateral है ABCD वो cyclic quadrilateral है. Reason? Converse of cyclic quadrilateral. Just check whether you have used
if you have written cyclic quadrilateral theorem or you have written converse of cyclic quadrilateral theorem. क्योंकि मैंने क्या बोला था, quadrilateral theorem कब यूज होगा, जब तुम्हें पता है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और फिर तुम उसका प्रॉपर्टी यूज कर लो। यहाँ पे हम लोग ने उल्टा किया, हम लोग ने पहले प्रॉपर्टी लिखा है, तो पहले प्रॉपर्टी लिखा और उसको यूज करके हम बोल रहे हैं कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ये उल्टा हो गया, उल्टा यानी कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ cyclic quadrilateral theorem. Okay, so just check whether you have written everything correctly. Rough diagram given to proof and all the reasons. Is everything written correct in the correct format in your notebook? Okay, so again it was a very simple sum, right? 2-3 लाइन का आंसर था इसका. Okay. Question number 6, and this is going to be your last question for this learning session. Okay. So in figure 3.51, this is your figure 3.51. Altitudes yz and xz of triangle wxy intersect at point P. Altitudes yz and xz कहाँ पे है? yz यहाँ पे है, okay, yz यहाँ पे है and xz यहाँ पे, ये दोनों altitude, altitude मतलब they are going to be at right angles with the lines they are intersecting with or touching to. Okay, वो right angles पे होंगे, that is the meaning of altitude. So ये altitude है, कौन सा ट्राइंगल के? ट्राइंगल wxy, ट्राइंगल wxy यहाँ पे है. So ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, उसमें xz एक एल्टीट्यूड है और xt एक एल्टीट्यूड है. ओके, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी. वो लोग दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें दो चीजें प्रूफ करनी है. फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल wzpt इज साइक्लिक. wzpt कहाँ पे है? wzpt यहाँ पे है. wzpt इसको साइक्लिक प्रूफ करना है. कैसे साइक्लिक प्रूफ करेंगे? सेम एज द प्रीवियस सम, राइट? रेक्टेंगल को जब साइक्लिक प्रूफ करना था, कैसे प्रूफ किया? कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स को तुम्हें ऐड करके 180 दिखाना है. अगर तुम लोगों ने कोई भी दो ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री दिखा दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा. सो अगेन अ 2-step आंसर. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू शो पॉइंट्स x, z, y, t आर कॉनसाइक्लिक. कॉनसाइक्लिक मतलब सेम सर्कल पे लाई करेंगे. ओके, तो x, z, y, t, where is x is over here, z is over here, t is over here, y, t. तो x, z, y, t इसको तुम्हें कॉनसाइक्लिक प्रूव करना है. सो दिस फॉर दिस वील यूज द लास्ट थ्योरम वी लर्न टुडे, राइट? कि अगर एक लाइन होगा, लाइन पे दो पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट्स दो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, जो दो अलग अलग पॉइंट्स पे एंगल बन रहे हैं और वो दोनों एंगल सेम साइड पे है, तो वो चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे. वो वाला थ्योरम यूज करना पड़ेगा. सो अगेन इट्स अ वन लाइन आंसर. ओके, बस उसके जो जो कंडीशंस है नेसेसरी उसके लिए वो लिखने तुम्हें, एंड देन यू हैव टू यूज दैट थ्योरम एंड इन वन लाइन यू विल गेट दैट आंसर. ओके, so I'll solve this sum for you all. Okay, you all can keep watching. If you want, you can pause the video and try it yourself. If you don't want to think, you want to directly see the answer, I'm going to show you the answer directly. Okay, so quadrilateral wzpt को cyclic दिखाना है. कैसे दिखाओगे? फर्स्ट अगेन यू राइट गिवन. क्या गिवन है? कि वो लोग दोनों एल्टीट्यूड्स है, राइट? yz तुम्हारा एल्टीट्यूड है एंड xt भी तुम्हारा एल्टीट्यूड है. तो दोनों एल्टीट्यूड मतलब क्या? वो जिस साइड पे ड्रॉ किए हैं उससे वो परपेंडिकुलर होंगे. सो yz इज परपेंडिकुलर टू xw. तो yz यहाँ पे है, xw यहाँ पे है, तो yz इज परपेंडिकुलर टू xw. नेक्स्ट क्या दिया है? xt इज परपेंडिकुलर टू wy. xt is over here, wy is over here. Okay, so xt is perpendicular to wy. ये तुम्हें दो चीजें गिवन में दी है. टू प्रूफ दो चीजें सेम टू सेम दे हैव कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन. नाउ यू स्टार्ट द प्रूफ. तुम्हें कोई भी दो ऑपोजिट एंगल्स को 90 डिग्रीज बताना है. तो w और एंगल p, ये छोटा, ये सबसे पहले कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? ये wzpt, राइट? wzpt यानी ऊपर क्या है? छोटा क्वाड्रिलैटरल. सो इफ यू वांट टू प्रूव दिस एज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, कोई भी दो ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 दिखा दो. सो w एंगल एंड p एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता हमें, राइट? So you won't use angle W and angle P. You will use angle Z and angle T, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग दोनों 90 डिग्रीज है, राइट? वो गिवन में दिया था. So we'll use angle Z and angle T, दोनों को ऐड करके 180 बता देंगे. So you first say yz is perpendicular to xw. So yz is over here is perpendicular to xw. तो इसका मतलब क्या हो गया? PZW. Okay, PZW यानी ये एंगल. PZW is 90 degrees. You say that as first equation. Similarly, you say xt is perpendicular to side wy, right? xt is perpendicular to side wy. So इसका मतलब क्या है? Angle ptw. ptw is over here. Angle ptw. This is also 90 degrees. So ये भी 90 degrees होगा, ये भी 90 degrees होगा. दोनों को ऐड कर दो. So दोनों को ऐड करके 90 plus 90, adding 1 and 2. Okay, यहाँ पे
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो दोनों को ऐड करके तो 90 प्लस 90 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आ गया, यानी दैट क्वाड्रिलैटरल, जो छोटा क्वाड्रिलैटरल है WZPT, ये cyclic quadrilateral है, using converse of cyclic quadrilateral theorem, right? Very similar to our previous sum. Okay, so your first part has been proved. Second part, ये दोनों कौन cyclic है? As I said, ये चार पॉइंट्स कौन से है? पॉइंट x, पॉइंट z, पॉइंट t, पॉइंट y, ये चार पॉइंट्स को कौन साइक्लिक बताना है। सो हम वो वाला थियरम यूज करेंगे, वेयर देयर इज अ लाइन एंड ऑन दैट लाइन देयर आर टू पॉइंट्स विद सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, पॉइंट z एंड पॉइंट t। ये दोनों इक्वल है एंगल, यस, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स इक्वल है। और दो अलग अलग पॉइंट्स है, यस, पॉइंट z और पॉइंट t दो अलग अलग पॉइंट्स है, राइट, और दो अलग अलग पॉइंट्स है। ये दोनों लाइन के सेम साइड पे है क्या? यस, लाइन हॉरिजॉन्टल है और दोनों ऊपर के साइड पे, तो दोनों सेम साइड ऑफ द लाइन भी है। सो सारे कंडीशंस मीट हो रहे हैं, तो वो थ्योरम को यूज करके तुम बता सकते हो कि ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक यानी सेम सर्कल पे लाई करेंगे। ओके, so this is how you write the answer. You say xzy कहाँ पे? यहाँ पे xzy, तो यहाँ वाला इज इक्वल टू ytz यहाँ पे है, ओके, और दोनों इक्वल टू 90 डिग्रीज है। दूसरी बात तुम क्या बोलोगे? पॉइंट्स x एंड y lie on xy, तो पॉइंट x एंड y lie on line xy, सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन xy, तो ये लोग दोनों ने एंगल z और एंगल t को सबटेंड किया सेम साइड पे, ओके, और वो दोनों इक्वल है। देन यू कैन यूज दिस theorem, okay? If two points on a given line subtend equal angles at two distinct points on which lie on the same side of the line, then the four points are concyclic. You use this theorem and just say that these four points are concyclic. तो ये again one line answer था। सब जो जो conditions है इस theorem में उसको लिख दो and you write the final required proof जो prove करना था, okay? So that's your final answer. So that's it. Just check whether you have achieved today's learning objective or not. Will you be able to solve problems based on cyclic quadrilaterals in the correct format? See, these are very simple sums, answer sahi aa jayega, but can you write that in the correct format? That's what you have to check. Okay, so can you solve problems based on cyclic quadrilaterals if I give you a new set of problems? If the answer is yes, then you have achieved today's learning objective. Okay, so that's it for this learning session. I hope you understood everything. I hope you found it very easy. And if you did not find it very easy, when you solved it and you saw that there was some discrepancy, there was some differences between your answer and my answer, I hope you upgraded yourself, you corrected yourself, and you have improved today as a result of that. Okay, that's it for this learning session. We'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.